Okay, so that moment we were studying what about the video, how to keep the video in web page. So the code written for this, okay, with the video elements started with start tag, attributes width and height, controls. I told you that controls compulsory. It is very compulsory because otherwise you will not get the controls. Okay, अगर आपको उसको ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा, कौन सा स्टार्ट बटन, प्ले बटन, पास बटन, उसको कंट्रोल्स चाहिए तो आपको कैसे कंट्रोल चाहिए, तो आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये ये है ना, इसके अंदर ये स्टार्ट स्टार्ट बटन, ओके, दिस my other is whatever headphone speakers, ओके, पास बटन, सो वो सब चाहिए तो आपको कंट्रोल्स का लिखना ही पड़ेगा कोड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट, source is an attribute. Okay, source element, source src is attributes or source element started with the source attribute. Here we need to keep the source movie mp4 video we need to keep, and this mp4 video that is to be kept आपको फोल्डर के अंदर, आपकी फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर आप नहीं रखोगे क्या होगा, तो ये उसको ब्राउजर को ये वीडियो नए सोर्स फाइल नहीं मिलेगा, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। उस समय कैसे डिस्प्ले नहीं होगा, तो इस टाइप का दिखाई देगा, ये इधर कोई वीडियो रन नहीं होगा क्योंकि वीडियो है ही नहीं। आपने फोल्डर के अंदर यू हैव नेट केप्ट दैट वीडियो इन योर फोल्डर, तो ब्राउजर को वो वीडियो नहीं मिलने की वजह से वो रन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड दैट दैट वीडियो द ब्राउजर विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वीडियो। आपको आपके फोल्डर के अंदर, ये जो जहां फोल्डर है आपने बनाया है, ये इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एक नाम रखा, यू हैव केप्ट ए नेम फॉर योर फोल्डर, विद इन दैट यू आर सेविंग ऑल योर वर्क, all code written for all web pages. Within that you need to keep that video file in that folder, then browser will be able to find out the video file, then it will run. Okay, now next, this is the second source file. Whenever this file will not be able to run, that moment this second file will be able, in case your browser will not be able to read these run video files, that moment this text will be displayed. Your browser doesn't support the video tag. Okay, so next, controls attribute. As I told you that controls attribute adds video controls, बताया था कि मैंने video controls क्या होते हैं, play, pass and volume. Okay, play button, pass button, volume. Okay, so next, so it is a good idea to add width height attributes. Why? So if you will not add that moment, what happens, if flicker will be page flicker happens while the video is being loaded, the जब वो video load हो रहा है वेब पेज के अंदर, ये कंट्रोल, ये विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, तो दैट मोमेंट क्या होगा, पेज फ्लिकर होना शुरू हो जाएगा। तो विड्थ एट्रीब्यूट्स आप लगाइए और उसकी वैल्यू सेट कीजिए, वीडियो का विड्थ इतना चाहिए मुझे, ठीक है। अदरवाइज आप ये नहीं लगाओगे तो वाइल वीडियो लोड होते समय पेज फ्लिकर होने की चांसेस है। ओके, नेक्स्ट, सोर्स एलिमेंट अलोज us to specify alternative video files. अल्टरनेट मैंने बताया, एक वीडियो चला, अगर वो नहीं चल पाया तो अल्टरनेट दूसरा वीडियो चलेगा। वो कौन डिसाइड कर, ब्राउजर चूज करेगा। अगर फर्स्ट वीडियो चलता है तो उसको रन करेगा, द ब्राउजर विल डिसाइड दैट which video to be run. So if the first video you have kept here two videos under the source attribute under the this is the source element, this is called not attribute, this is the element, source element src attribute is equal, this is the first video file, this is the second video file, but this is the mp4 format, this is OGG format. Okay,
So so if it will not be able to run browser, this second alternative source file will be run, video file. Okay. So next, try to understand what is that. So source element allows us to specify alternative video files. So which browser may choose from. So browser will choose from the video files. Okay, alternative video files. First, the browser will use the first recognized format. So the web browser, it will recognize the format, first recognized format. If you have given two formats and browser, whatever the format it recognizes, so that will be displayed. Next, text between the video and the video, video start tag, video end tags. So between whatever the text you write, that will be displayed in browsers if it do not support the वीडियो एलिमेंट. अगर वीडियो एलिमेंट को वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर पाता है तो उस समय क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट टैग और वीडियो एंड टैग के बीच में आपने जो टेक्स्ट डाला वो डिस्प्ले करेगा. मैं दिखाता हूं आपको. ये ये टेक्स्ट आपने डाला कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग. क्योंकि बीच में है ना, मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी साइड व नॉर्थ साइड में क्या है, इनको इंग्लिश से ज़्यादा परिचय नहीं होते हैं. मेरे क्लासेस में, फ्री क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आए थे. आके बच्चे बेचारे मेरे से बात नहीं किया, चले गए, शर्मा गए. क्यों शर्मा रहे, मेरे से पूछते हैं, बात करते हैं, सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे, अच्छी बात है मगर हमको समझ में नहीं, बीच में थोड़ा हिंदी में पढ़ा, बोलो मैं पढ़ा देता. इसमें क्या बात है. आपसे क्लास में आए हैं, आप मेरे से बात किया करो और बोलो, बीच बीच में हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश तो कंपलसरी है, बीच में हिंदी भी बता दूंगा. ठीक है. तो ऐसा कोई डरो मत, क्लासेस में आए हैं कोई नॉर्थ साइड से, मोस्टली बहुत सारे बच्चे आए थे, बीच में चला मेरे पता चल जाता है इधर कौन आता है. हाँ, क्लासेस में नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा क्लासेस. जैसे मैंने प्रॉमिस किया, क्लासेस चलते रहेगा, बहुत सारे क्लासेस. अभी मैंने जावा पाइथन बहुत कवर किया है, ये बैकएंड में पढ़ते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग में. और उसके बाद फ्रंट एंड साइड में आया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा, जावास्क्रिप्ट टच करके छोड़ा है. और CSS भी, CSS कुछ नहीं है, आपका वेबसाइट का क्या स्टाइल्स डालना, उसका स्टाइल मतलब कलर, कलर क्या, बैकग्राउंड कलर क्या है, हेडर सेक्शन का क्या कलर है, फॉन्ट क्या है, पैराग्राफ का क्या कलर, इस टाइप का जो चलते हैं सब CSS के अंदर आते हैं. जब शुरू में जब HTML शुरू किया था उस समय ये सेपरेट नहीं था, एक ही में था. बाद में जब मैं जैसे बताया था, मैं ब्राउजर शुरू शुरू में इनिशियल ब्राउजर स्टार्टेड विथ टेक्स्ट ओनली. Then latest browser उस समय, that moment internet explorer was there in those 85, 1985. बाद में लेटेस्ट ब्राउजर्स आना शुरू हो गया एंड दे स्टार्टेड टू सपोर्ट कलर्स. ओके. so come so whenever your browser does not support the video, so this text will be displayed. Huh? You can change this as per your whatever the text you, if you run this code na, so here here it support, this file is being run, so your video will be run here. So text will not be displayed because क्योंकि वीडियो चल रहा ना आपका, इसलिए वो, अगर आपने ये फाइल, फर्स्ट फाइल आपने हटाया तो सेकंड फाइल रन होगा, अगर ये अवेलेबल है तो. अभी इसको आपने डिलीट कर दिया, ये कोड को डिलीट, तो क्या होगा. ओके, ये पूरा 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 है. इसके अंदर आ जाओ. अगर आपने इसके अंदर एक दो सोर्स फाइल रखा हो आपने, ये सोर्स फाइल आपने फर्स्ट सोर्स फाइल हटा दिया, क्योंकि मैं आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट सोर्स फाइल, whatever the source file format, browser will identify, that will be run. So this, let us see, if I remove this one, two
video files here was kept. So then only one file is there. This is .ogg file. So it will be run. Let us see what happened. Next file, if available is there, that file will be run, that video file. Otherwise text will be displayed. See, controls are there, but second video file, second video file is running, but picture is not loaded here. There is no any, only voice is there here. There is no any video file, but here they have mentioned this is the video file. Okay, video type OGG. Understood that? If your browser will not support video file, that moment this text will be displayed. Okay, next, come to the point. Next is what controls attribute. I told you that it adds video controls like play, pass, and width and height attributes to be added. Otherwise page may flicker. पेज फ्लिकर हो जाएगा ये नहीं डालेंगे तो. ठीक है. सो आपको चेक करना है तो आप इसके अंदर जाइए. इसके अंदर कोड के अंदर आपको क्या करना है, ये विड्थ हाइट ये दोनों निकाल दो, तो रिमूव कर दो. दैट मोमेंट क्या होगा देख लेना. ये कंट्रोल्स, ये विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स नहीं डाला तब क्या होगा. ओके, ये विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स हम निकाल दिए इधर से, ओनली कंट्रोल्स है. अभी रन करो तब क्या होगा, वीडियो रन होगा. वीडियो विड्थ हाइट नहीं की वजह से तो और चाहिए वो, यू नीड दैट कंट्रोल्स. हाँ, ओके. नाउ कहाँ, ओके नाउ कहाँ चलते हैं अभी. मैंने बताया का विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स आपको डालना पड़े. यू नीड टू कीप बोथ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स. अल्टरनेटिव वीडियो फाइल्स रन करता है बताया था. टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा. ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ये वीडियो के अंदर ऑटो प्ले आपने इस्तेमाल किया. ऑटो प्ले एट्रीब्यूट आप डाल दिया. ऑटो प्ले इज एन एट्रीब्यूट. सो ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, द स्टार्ट वीडियो ऑटोमेटिकली, वीडियो को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए ये एट्रीब्यूट डालते हैं. एग्जाम्पल कोड के अंदर देखो, ये विड्थ हाइट के एट्रीब्यूट के बाद ऑटो प्ले, यू राइट द कोड ऑटो प्ले सिंपली, नथिंग. सो देन वीडियो स्टार्टेड ऑटोमेटिकली. ओके, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज व्हाट देखते हैं. क्रोमियम ब्राउजर्स डू नॉट अलो ऑटो प्ले इन मोस्ट. क्रोमियम ब्राउजर्स ऑटो प्ले को चलाते नहीं है, अलो नहीं करते. सो उस समय क्या करना पड़ता है हम लोग, और एक एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले ऑलवेज अलाउड, म्यूटेड. हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड. ओके, सो उस समय क्रोमियम ब्राउजर्स ऑटो प्ले को नहीं अलो करते हैं, तो उस समय हमको म्यूटेड एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा. उस समय क्या होता है, क्रोमियम ब्राउजर्स ऑटो प्ले को अलो नहीं करते हैं, बट म्यूटेड ऑटो प्ले को अलो करते हैं. म्यूटेड ऑटो प्ले मतलब क्या होता है, ऑटो प्ले रन होगा बट म्यूट होगा वो. ओके, हाँ. सो add muted after autoplay to let your video start playing automatically but muted. तो मतलब आपकी वीडियो चलेगा बट म्यूट रहेगा. कब ये प्रॉपर्टी हम डालेंगे, ये ऑटो प्ले के बाद म्यूटेड लिखो. इससे क्या होता है, आपकी कोड, आपके वीडियो रन होगा. एड म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले टू लेट योर वीडियो. ऑटो प्ले के बाद ये म्यूटेड ये एट्रीब्यूट डाल दो, वीडियो को चलाएगा. टू लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिक बट म्यूटेड.
वीडियो चलता रहेगा बट म्यूट होगा, कोई साउंड नहीं होगा, कोई सो ये है, सिंपली इतना ही है। मैंने बताया ऑटो प्ले डाल दिया तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलेगा, म्यूटेड डाला तो, क्योंकि कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, अलो नहीं करते, इसलिए म्यूटेड डालना पड़ता है, तो वीडियो प्ले होगा बट म्यूट होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट attribute क्या, ब्राउजर सपोर्ट। So the numbers in the table specify the first browser version that fully supports the video element. ये टेबल के अंदर ये क्या होता है, वीडियो एलिमेंट के अंदर ये जो आप नंबर डालते हैं उससे ये क्लियर होता है कि द नंबर्स इन द टेबल फर्स्ट ब्राउजर वर्जन दैट फुल्ली सपोर्ट्स द वीडियो एलिमेंट। ओके, इस वर्जन को फर्स्ट ब्राउजर क्रोम था, 9.0 को कौन सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। 3.5 को मोजिल्ला फायरफॉक्स, 10.5 का ओपेरा, 4.0 को ये कौन सा ब्राउजर है देखना पड़ेगा मुझे, आई नीड टू, सफारी, दिस द सफारी आई हैव, व्हेनेवर यू कीप द माउस योर mouse here, safari, this is the opera bro, this is the mozilla firefox, this is microsoft edge. Microsoft means internet explorer edge, yeah, microsoft internet explorer created by microsoft, na? This is google chrome. So this number in the table, this is a table, show specify the first browser version that fully supports the this video element. It is this version supported by Microsoft Chrome, Edge, this version supported by Edge, this version supported by that is what Mozilla Firefox, this version supported by Safari, this version supported by Opera. So now HTML video formats. I told you the different HTML video format in the classes. Three supported video formats are MP4, WebM, and OGG. Okay, HTML supports only these three video formats. But what about YouTube support recommends what? MP4. So now let us see different formats. Within these different formats, MP4, WebM, OGG. Edge supports all. Microsoft Edge. Next word, Chrome. Google Chrome supports all. Firefox supports all. Safari supports Safari not support this one. No, what is this? OGG format will not be supported by Safari. Opera supports all. HTML video media types. Okay, file format MP4. This is what? This is the media MP4. So at the time of type attribute, we need to mention this one, video oblique MP4. Whenever you write the code, that moment here we need to type is equal video slash MP. We need to mention here. Understand? We need to mention which type of video format it is. Otherwise, browser will not be able to understand that. Okay. Next, come here. This is the media type. So WebM, we need to write the code like this. Video under the type attribute is equal. Okay, type video slash WebM. VGG for OGG, we need to write like this. So next, video HTML video methods, properties, and events. Let us try to understand what are the HTML video methods, properties, and events. HTML DOM, it defines methods, properties, events for the video element. Okay, who will define the methods, properties, and events for whom? video element के लिए methods, properties, events को कौन define करता बताता है? HTML DOM. देखते हैं next क्या होता है. ये allow करता है इसको लोड करना, लोड, प्ले एंड पास वीडियोस एज वेल एज सेटिंग ड्यूरेशन एंड वैल्यूम. ये आपको वीडियो को लोड होने का अलो करता है, उसको रन करने का, प्ले करने का अलो करता है, पास करने का अलो करता है,
जैसे कि आपने सेट किया हुआ ड्यूरेशन एंड वैल्यू, उसके मुताबिक ये लोड होने का, चलाने का और पास करने का अलो करता है। HTML DOM. Okay, let us see. So DOM, there are also DOM events that can notify you when a video begins to play is passed. तो DOM events के अंदर क्या होता है, हमको notify करेगा। DOM event notify that when a video begins to start, that event notify you when the video begins to play. Otherwise, when the video begins to pass, कब पास हो, है ना, वीडियो कब पास होगा, कब चलेगा, वो DOM इवेंट्स आपको नोटिफाई करते हैं। ओके, लेट अस कोड के अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर ओके कोड राइट योरसेल्फ फॉर ए फुल, अभी इसके अंदर कोड आएगा, देखते हैं। लेट अस सी द कोड। तो दिस इज द ओके, नाउ हियर this is the event. This is the event. That event is what? DOM event on click. Whenever we click on that, play pass. Okay, play oblique pass. Okay, that is what under the button. That is, button is what? Button is an element within this button. Start element started with button start tag, closed with end tag. Within this event written on click. Whenever we click on, okay, video will be played, otherwise pass. Next, one more on click. Okay, whenever we click on big, whenever we click on play button, see here, this is the play oblique pass button. Whenever we click on this, video will be play, otherwise pass. Whenever we click on this button, big button, so video will be make big. So whenever we click on small button, it will be small. Click on small, it will become small. Whenever we click on big, it becomes big. Whenever we click on normal, the picture will not play, picture will be run, video will be run, pass, pass. Okay, these are all events. Okay, for every button, these are called all buttons. The over the button, this is the text. Here, this is the text. If you can change the text here. If you want to change, you keep my name Vasu. Okay, for the play, Vasu play. For big you can change the text here, big Muni. Okay, here change yourself somewhat, Ravi. But we can't understand that what is the action will be done, action will be run. Make normal, Shankar, Shiva. Okay, if you run all the button, Vasu play, Muni, Ravi, normal. So now for the normal you say, okay, normal, you use Shiva, you change this as normal Shiva, you remove this normal, only Shiva will be displayed on the button. Okay. So this is whatever, these are the actions under button, on click button, code written. Okay, now under the video element. Okay, video element, this is what video created ID with 420 source element started, source attribute, here the source video file kept here, alternate video source. Okay, but whenever these video files will not available, this text will be displayed, video element closed. Okay, so this code written under div means, okay, div is what, 1 minute.
So that moment, I told you that these are the buttons. For that buttons code written inside of the div element. Okay, this is the div element. Okay, under div element. Okay, under the button, for every button, div element started with style. Style is equal text align center. Huh? Okay, now see all the buttons, every button written with a event on click. Okay, so all the total content, all the attributes written under div element. Okay, div element closed with end tag. Okay, finally JavaScript is written under the script element. Script, this is the script start. Script element started with script start tag, and then finally closed with the script end tag. Okay, so within the JavaScript, functions will be run. I told you that whenever we will discuss JavaScript, that moment I will explain all the JavaScript, whatever functions, how the functions will be run. Okay, three functions is the function. I told you that function is nothing but a pre-written code will be run. Okay, the function name, this is the function name of the function. Okay, this is the name of the function. So in the previous classes I have explained what is the difference between function and method. The function is not part of a class. Okay, method is part of a class. Method or function, both are not same. Function, the code will be run. Okay, whatever the code will be, you have whatever the code you have written, and you have kept a name for that code, and whenever you call that code name, the total code will be run. That is not part of a class, that's why it's function. So method is called function. Whenever function, you keep the function in part of a class, now that function becomes a method. Method, in under the method also code will be run, but whenever you want to call that method, either that method will be called with the class name, otherwise object name. Understood that? So now this is the under this script, under the scripts, Java, this is called JavaScript code. Okay, next is what? Paragraph. P element. P element means paragraph element started. This is the paragraph video courtesy of. Okay, this is the hypertext element. I told you that hypertext a tag. This is the hypertext reference attribute. Here we need to mention the location, the domain name of the website. Okay, you will get the courtesy where this is the video courtesy. Video courtesy from where? This website. Okay, we have mentioned here. So now body closed and HTML closed. This is the code. Huh? So now come to the next point. Now see. Now video tags, HTML video tags. Video, this is the video tag means start tag, defines a video or movie. So end tag means just we need to keep a forward slash here. That becomes a end tag.
So it indicates that video element closed. Source tag defines multiple media resources. If you want to keep, if you want to run multiple videos, okay, such as video and audio, defines multiple media resources or media element, such as video and audio. For this video, if you want to run only all video files, and every time you need to mention source and file, okay. If you want to run any audio element for multiple resources, you can run track element. Track tag defines text tracks in media players. So now see, now this class is over. So now let us go for next topic, that is what? HTML audio. So under the audio element will be used to play an audio file and a web page. अगर आपने वेब पेज के अंदर ऑडियो फाइल को रन कराना है तो ऑडियो एलिमेंट इस्तेमाल कीजिए. सो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोड देखते हैं. ऑडियो फाइल HTML के अंदर ऑडियो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं. कोड क्या है? ऑडियो, सेम ऑडियो एलिमेंट स्टार्टेड विथ start tag, ended with closed with end tag. And now here controls, जैसे वीडियो के लिए कंट्रोल्स लगाया है, सेम कंट्रोल्स है. सोर्स आई टोल्ड यू द सोर्स एलिमेंट विथ सोर्स एट्रीब्यूट. इधर हमने सोर्स फाइल बताना पड़ेगा, कौन सा ऑडियो फाइल. टाइप बताएंगे ऑडियो, ओके. ओजीजी टाइप ऑडियो MP. ये टेक्स्ट लिखेंगे. अगर ब्राउजर उसको चला नहीं पाया तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ओके. नाउ ट्राई करेंगे, लेट अस सी. So the total code, now this is compulsory declaration and HTML root element, body element, and then after this audio element started with start tag, audio element closed within this source element with source attribute. This is the audio file and alternative audio file text will be displayed. Let us see to get this voice, okay. Audio file, if you want to run this audio in your web page. Now come to the next audio. How audio HTML audio works, how does it works, कैसे काम करता है ऑडियो फाइल, कैसे चलता है वेब पेज के अंदर. ये कंट्रोल एट्रीब्यूट जैसे वीडियो के अंदर हमने समझा, कंट्रोल एट्रीब्यूट के अंदर अब आप लगाओगे कंट्रोल एट्रीब्यूट को, वो ऐड करता है. कंट्रोल्स क्या है? प्ले, पास एंड वीडियो. सोर्स एलिमेंट क्या करता है? सोर्स एलिमेंट हमको अलो करता है कि अल्टरनेटिव ऑडियो फाइल्स को रन करने के लिए ब्राउजर उसके अंदर आपने दो फाइल आपने दी, उसके अंदर एक को चूज करेगा, ओके. सो ब्राउजर जो फर्स्ट फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करेगा उसको रन करेगा. So source element allows us to specify alternative video audio files, so that browser from that browser chooses. So browser will use the first recognized format, okay. So जो टेक्स्ट हमने लिखा है ऑडियो एलिमेंट स्टार्ट टैग का एंड टैग के अंदर, जो टेक्स्ट आपने इधर लिखा है वो टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले होगा, ब्राउजर डिस्प्ले करेगा. जब भी ब्राउजर ये ऑडियो फाइल को नहीं सपोर्ट करता है तो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. सो ऑटो प्ले डालने से, ये एट्रीब्यूट हम डालेंगे तो ऑडियो ऑटोमेटिकली चलेगा. द ऑडियो फाइल विल ऑटोमेटिकली रन व्हेन यू यूज ऑटो प्ले एट्रीब्यूट. सो जस्ट आफ्टर कंट्रोल्स यू यूज दिस ऑटो प्ले. सो एज इट एवरीथिंग इज सेम. अगर कुछ ब्राउजर्स ऑटो प्ले को सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्रोमियम ब्राउजर्स डू नॉट अलो ऑटो प्ले. क्रोमियम ब्राउजर्स अलो नहीं करते हैं ऑटो प्ले को. उस समय आपने म्यूटेड ऑप्शन एट्रीब्यूट लिख लो, म्यूटेड ऑटो प्ले. सो म्यूटेड, आप ऑटो प्ले के बाद म्यूटेड लिखते हैं तो आपका ऑडियो चलते हैं बट म्यूट होगा. सो ऑटो प्ले के बाद म्यूटेड लिख लो, जैसे वीडियो को हमने लिखा है, ठीक है. तो सेम इधर जो टेबल में ऑडियो एलिमेंट के साथ
हमने जो ऑडियो एलिमेंट के साथ जो ये वर्जन्स लिखे हैं इन द टेबल के अंदर, ये ब्राउजर वर्जन्स है, तो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। क्रोम ये 4.0 वर्जन को सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज 9.0 वर्जन को सपोर्ट करता है। ओके, ये वर्जन्स है। The numbers in the table specify the first browser version that fully supports them. उस ऑडियो एलिमेंट को कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है। ओके, दिस ऑडियो एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, HTML ऑडियो फॉर्मेट्स। सो HTML3 सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट, तीन को सपोर्ट करते हैं, MP3, WAV एंड OGG। सो HTML एज एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है तीनों तीनों ऑडियो फाइल्स फॉर्मेट को। क्रोम तीनों को सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स तीनों ऑडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, सफारी तीनों, सफारी लास्ट जिसको सपोर्ट नहीं करता, कौन सा, ओजीजी ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, ओपेरा तीनों को सपोर्ट। ये स्टार मतलब फ्रॉम एज 79। ओके, नेक्स्ट HTML ऑडियो मीडिया टाइप्स। फाइल फॉर्मेट MP3 है, इसको लिखना पड़ेगा टाइप के अंदर हमको ऑडियो स्लैश MPC। ये मैंने टाइप एट्रीब्यूट बताया, उसके अंदर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, कहाँ है कोड के अंदर आपको दिखाया मैंने पिछले भी, और पिछले कोड के अंदर भी दिखाया था कहाँ लिखना पड़ता है। इसके अंदर हमको टाइप के अंदर बताना पड़ता है ऑडियो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इसकी एक्सटेंशन इधर लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है चीज़ है मल्टीमीडिया के अंदर, HTML ऑडियो फॉर्मेट्स टाइप्स हो गया। ऑडियो मेथड्स प्रॉपर्टीज, HTML DOM defines methods, properties and events for the audio elements। तो कब आपका ऑडियो लोड होगा, कब प्ले होगा, पास कब होगा, जो ड्यूरेशन सेट किया हुआ, जो वैल्यू आपने सेट किया उसी मुताबिक ये ऑडियो एलिमेंट के अंदर ये HTML DOM हमको बताएगा, नोटिफाई भी करेगा कब ऑडियो बिगिन होगा, कब नोटिव प्ले होगा, कब पास होगा। ओके, ऑडियो टैग्स हमने पढ़ लिया, दिस इज द ऑडियो टैग, ऑडियो एलिमेंट स्टार्टेड विथ स्टार्ट टैग, इफ यू राइट फॉरवर्ड स्लैश इट बिकम्स व्हाट, एंड टैग। साउंड कंटेंट को डिफाइन करेगा, सोर्स सोर्स एलिमेंट स्टार्टेड विथ सोर्स स्टार्ट टैग, ये डिफाइन करेगा मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेस के लिए, क्या वीडियो एंड ऑडियो के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्या है, HTML plugins। What are the HTML plugins? So plugins के बारे में समझेंगे। Plugins are computer programs, okay, that extend the standard functionality of the browser। तो ये plugins क्या करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, कोड है लिखा गया, वो ब्राउजर का जो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मतलब ब्राउजर का फंक्शन जो फीचर्स हैं उसको ज़्यादा फीचर्स देंगे। प्लगइन्स प्लगइन्स वर डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट, बहुत सारे काम के लिए प्लगइन्स बनाया गया। उसके अंदर क्या है, किस किस को ब्राउजर का जो काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, दे विल एक्सटेंड द वर्केबिलिटी ऑफ द ब्राउजर्स दिस प्लगइन्स टू रन जावा एप्लेट्स, जावा एप्लेट्स को रन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल्स को रन करने के लिए, टू डिस्प्ले फ्लैश मूवीज, टू डिस्प्ले मैप्स, टू स्कैन फॉर वायरसेस, अगर कोई वायरस है उनको चेक करने के लिए, टू वेरीफाई ये बैंक आईडी, ये सब के लिए क्या होता है, हमको प्लगइन्स होते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स है।
ये ब्राउजर का जो फंक्शन है, उसकी काम करने का जो कैपेबिलिटी है, उसको ये बढ़ाता है। इसके अंदर क्या होता है, वार्निंग क्या है, मोस्ट ब्राउजर्स नो लॉन्गर सपोर्ट, बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। किस किस को सपोर्ट नहीं करते हैं, जावा एप्लेट्स को एंड प्लगइन्स को बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स को। ActiveX controls are no longer supported in any browser. ActiveX controls भी नहीं सपोर्ट हो पाता है बहुत सारे ब्राउजर्स के अंदर। ActiveX controls are also no longer supported in any browsers. So Java applets हो गया, plugins हो गया, active controls बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं है। Let us see. To support for Shockwave Flash has also been turned off in modern browsers. So ये फ्लैश चला, शॉकवेव फ्लैश चलना वो भी बंद, बहुत सारे मॉडर्न ब्राउजर्स सपोर्ट नहीं करते, टर्न ऑफ किया गया। ठीक है, लेट अस सी क्या होता है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट? ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आता है, पूरा मीडिया के अंदर। ये प्लगइन्स के बाद HTML यूट्यूब पढ़ लिया तो खत्म हो गया, तो उसके बाद APIs पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। ऑल ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर मैंने बताया था, वो तेरा सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या है, जितने भी ब्राउजर्स है ऑब्जेक्ट एलिमेंट को सपोर्ट करता है। उससे क्या हमको फायदा मिलता है ऑब्जेक्ट एलिमेंट? Okay, today's class is closed. We will meet on next Friday.